Okay, we did last time Isaiah 42:8. Okay, Isaiah 42:8 I'm reading. I am the Lord. That we had done this last time. I am the Lord, that is my name. And my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. I am the Lord, matlab I am Yehovah. Yehovah is self-existent or eternal. In English it is Jehovah, but in Hebrew it is Yehovah. The word Yehovah, the term Yehovah means self-existent, eternal or eternal. Means what? He is existing by himself. Nobody has created him. We are existing because of him. He has not been created by anyone. So that name, I am the Lord, I am Yehovah, that is my name. Name is what? Shem. Shem is character, authority, honor, or position. That is my character. And my glory, my grandness, my splendor will I not share with another. Neither my praise to graven images. Graven images is idols. My glory will I not share with another. Nobody will God share. Father God, may आएगा last topic, most sensitive in this. Mama Mary चे topic का नेतोलो. Very powerful topic. Mama Mary, that is one of the biggest idols in Catholicism. Why I am calling Mama Mary? Because I was there. That song is there. Pota, Chalakudi, Mama Mary and all. I am coming there. Bhakt, Mama Mary ka Bhakt. I will be coming there. My glory will I not share with another. Neither my praise with graven images. His glory, God's glory, He will not share with another. Only Father, Son and Holy Spirit. बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा. उनके बिना नहीं. उनका glory will not share. वो अपना पुत्र दिया, वो अपना प्यार दिया, वो ये संसार दिया, वो अधिकार दिया तुम्हें. वो अपना प्यार, वो अपना glory महिमा, वो महिमा किसको भी नहीं देगा. किसको भी नहीं देगा. मैं प्रभु हूँ, मैं यही मेरा नाम है. मैं न तो दूसरे को अपनी महिमा दूंगा और न मूर्तियों को अपना स्तुति का. हाँ, वापस पढ़ो, स्लो पढ़ो. मैं प्रभु हूँ. ये प्रभु है, वो हिंदी में प्रभु नहीं, वो यहोवा है. यहोवा सेल्फ एग्जिस्टेंट. वो अपने आप ही जी रहा है. वो किसके अंडर नहीं जी रहा है. वो हमारे जैसे, हम उसके अंडर जी रहा है. वो उसको कुछ नहीं चाहिए. वो अपने आप ही जी रहा है. वो उनका नाम है यहोवा. मैं प्रभु नहीं, मैं यहोवा है एक्चुअली उनका नाम. यही मेरा नाम है. मैं न तो दूसरे को अपना महिमा दूंगा और न मूर्तियों को अपना स्तुति का. हाँ, मूर्तियों का स्तुति प्रेज नो वर्शिप. हांव शेरेसभर हांव तो हांवूच. दुसरे खंयचेच रचनेक हांव म्हजी महिमा दिवचो ना. दुसरे कोणा महिमेक हाँ दिवचो ना. दुसरे कोणाक महिमे दिवचो ना. पोतूनच दुसरे खंयचेच रचनेक रोसना. दुसरे खंयचे रोसनाक आमी पोया. मागीर मामा मेरी रोसनार. मागीर ते सगळे सारको डिटेलान येतलो. ते कोणाक काय हांव कोणाक हिंगा कन्फ्युजनाक घालचो ना. ते मामा मेरी रोसनार म्हणून आमी पोया आनी तूं तेंकां ग्लोरी दिता आनी ते श्राप तुमचेर पडटा. सांबाळून हांव ते सारके डिटेलान टॉपिकान येतलो. रोसनार पोतून वाचते. रोसनार सारके बस. हांव शेरेसभर हांव तो हांवूच. दुसरे खंयचेच रचनेक हांव म्हजी महिमा दिवचो ना. मूर्तीक म्हजो मान दिवच्याक केन्नाच कबूल आसचो ना. कबूल म्हणजे कबूल कितें म्हणटा तेका. सो नाव विल सी Isaiah 48:11. Isaiah 48:11. Isaiah 48:11 says, for my own sake, even for my own sake will I do it. For how should my name be polluted? And I will not give my glory to another. हांव करता ते म्हजेच खातीर करता. कित्याक म्हण म्हजें नांव भश्टोवंक दिवचे दुसऱ्या कोणाकूच हांव म्हजी महिमा दिवचो ना. सोडून
दिवचो ना. मागीर तो मोहिमा कोणाक सोडून दिवचो ना पोतून वचता. हांव करता ते म्हजेच खातीर करता. कित्याक म्हूण म्हजें नांव बश्टावंक दिवचें दुसऱ्या कोणाकूच हांव म्हजी महिमा सोडूंक दिवचो ना. हें उगडास दवर, स्वता उगडास दवर. मोहिमा देव कोणाक दिवचो ना, कोणाक दिवचो ना, तुका आनी म्हाकाय दिवचो ना, कोणाक दिवचो ना. आमी सगळे रोसनार, कोणाक दिवचो ना. स्वर्गारान आनी संवसारानूय कितले रोसनार आहा, कोणाक दिवचो ना मोहिमा. देव हेंच उगडास दवर. हें मेन की पॉयंट. हितून सगळे आयडोलेट्री सोंपता. He will never give his glory. Always remember, God will never share his glory with another. Whether in heaven, whether in earth, if you are a creation of God, he is not going to share his glory. Remember that. That is the main key. If you want to know whether you are right or wrong, doing what you are doing, nonsense, know one thing, he will never share his glory. He will share his love. He shared his son. He killed his son on the cross for our sakes. He gave us dominion on earth, power on earth, but he will not give his glory to another. So see in Psalms, now we'll go back. Yeah, the Psalms is looking from the desert story. हम लोग वो desert में देखे वो लोग क्या किया, वो गाय का मूर्ति को पूजा किया. तो उधर से अभी Psalms में से देखेगा वो क्या बोल रहे हैं. We'll see from the angle of Psalms what they did in the desert, how they worshipped that idol, and we'll see Psalms 106, 106, 21. We'll see from Psalms 106, 21. They forget God. Their savior, which had done great things in Egypt. See what they are saying. They forget. Here it is English, the old English. They forgot actually. They forgot God, their savior, their help. Savior is help. Which had done great things in Egypt. वो सब भगवान ने किया उनको. वो आग में आया, क्लाउड में आया, उसका चप्पल कुछ भी चेंज नहीं किया, कपड़ा भी नहीं बदला, सब चमत्कार हो रहा था. वो सब भूला. अभी भी तुम्हारे लाइफ में, तुमचे लाइफान, in your lives, how many things God has done from when you were born till now? How many things you remember? So many miracles. ऍक्सिडेंट हुई तुमका साल्वार केले, टायर्ड जावन हुई पडटलो, मरतलो आसलो, सेफ जालो. कितले तुमचे लायफान कितें हेल्प केला, तुमका हेल्पूच नासलो, कोण नासलो, फ्रेंड कोण नासलो, देव आसलो ते टायमार. हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर दॅट? फॉरगॉट. हे तेंचे दे फॉरगेट गॉड देअर सेवियर विच हॅड डन ग्रेट. दिस इज द की पॉइंट. इफ यू रिमेंबर दिस नो गॉड दॅट वेन यू वेर यू वर, तेन्ना तू पडलेलो, तुका देवान को हाडलेलो. इफ यू रिमेंबर दिस नो, नाव यू विल से नो प्रॉब्लम. आतांय पडलेलो देव तेन्ना म्हाका उखललो, आतांय उखलतलो. केन्ना तुमकां भिरांत येता तेन्ना तुमी विसरले देव. तेन्ना ते टायमारूय हांव तेंच आहलो लायफ म्हाजें. तेन्ना देव पावलोलो, कोण नासले म्हाज्या लायफान. ते फ्रेंड, जिगरी दोस्त, लंगोटी यार, वो कोई नहीं था. वो दोस्त कोई नहीं था. इधर था वो, गायब हो गया. वही टाइम पे गायब होता है वो अलादीन जैसा ना, वो गायब हो गया. 21. बस. तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. इजिप्तात ताणें केल्ली व्हरची कर्तुबा, खांब्याच्या देसात नावला विजविता, तांबड्या दर्यात अजबाचे चमत्कार. उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया, जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे. अरे ओके, नो प्रॉब्लेम. ते दोन्ही वाज 21. ते घातलं असतले. ते कितें जाता न्हू, वेन लँग्वेज लँग्वेज ट्रान्सलेशन जाता न्हू फ्रॉम वन लँग्वेज, मागीर मोदें मोदें उतरां बीन नासता. मागीर ते ऑथर पुट्स द, आय विल शो यू वन मोर थिंग नो इन द इंग्लिश बायबल. इट इज इटैलिक्स. इटैलिक्स म्हणजे स्लांटिंग. बाइबल में ना, इंग्लिश बाइबल में इधर पता नहीं, हिंदी में, क्योंकि हिंदी बाद में वो किस में से ट्रांसलेट किया पता नहीं, वेदर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो पता नहीं. मगर इंग्लिश बाइबल में ऐसा स्लांटिंग, थोड़े वर्ड है ऐसा स्लांट, स्ट्रेट नहीं, ऐसा है. इसके मतलब क्या है? इटैलिक्स मतलब उत्तर नहीं था जब ट्रांसलेशन करने वक्त, तो ऑथर में अंडरस्टैंडिंग क्या मिला, वो उत्तर डाला उसने. तो जब आप पढ़ते हैं तो दोनों तरफ पढ़ने का, वो उत्तर बिना पढ़ने का और
लेके पढ़ने का, क्योंकि कभी वो उत्तर डाला, वो कंफ्यूजन डाला. So that is the author's translation. The author, out of his wisdom of what he understood, he put that word. But maybe that word is not to be put only there. So you have to read it in both ways when it comes to English. The italics, I will show you. I don't have. This is my digital thing, so I don't have that. But here, like this, I have here also. Like here, you'll see, no? Here, see, destroy. So you have to read both ways. So anyway, इसलिए वो अभी 21 दिखा रहे हैं ना, वो गलती नहीं है उधर. वो क्या उधर कभी उत्तर नहीं मिला ना, वो लोग डाला है, तो वो दो ऐसा शब्द में वो अभी क्या करते हैं, मिला तो मिला कोंकणी बायबल वो पडा हो गए नो मेवले ते वळले ते हिब्रूचे ते आमकाय मेवपाचे नासले ते पडो. उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया भुला दिया वो. जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे. बस अभी देखा 22. Wondrous works in the land of Ham and terrible things in the Red Sea. Terrible is frightening things in the Red Sea. वो रेड सी जस्ट थिंग अभी अब अरेबियन सी में ऐसा खुला था, क्या चमत्कार है वो, कितना बड़ा वो वेव्स रहता था बीच में. ये Therefore 23. Therefore he said that he would destroy them. Had not Moses, his chosen, stood before him in the breach. Breach is in the gap. To turn away his wrath, lest he should destroy them. उन्होंने अपने मुक्तिदाता ईश्वर को भुला दिया जिसने मिस्र देश में महान कार्य किए थे, हम देश में चमत्कार दिखाए थे और लाल समुद्र के पास आतंक फैलाया था. वह उनका सर्वनाश करने की सोच रहा था, किंतु उसके कृपा पात्र में मूसा बीच में आया. क्यों मूसा बीच में नहीं आया, नहीं तो इनको खत्म करते थे. और ईश्वर ने उन पर से अपना विनाशकार क्रोध हटा दिया. तरी देवाक आपल्या तारकाक ती विसरली. इजिप्तात ताणे केली वर्ती कर्तुवा खांब्याच्या देशात नवला निर्मिता. तांबड्या दर्यात अजबाचे चमत्कार देखून तो ताचो नाश करून येवजितालो. पूण भस्म करून आयतो जाल्लो राग पेल्यान काढून त्याच्या खातीर विनंती करूंक त्याच्या मुखार जालो उबो मोजेस ताणें वेचून काडलेलो. ओके 10 chapter 28. (28, 29, 30). Now see, they joined themselves also unto Baal Peor and ate the sacrifices of the dead. Okay, this Baal Peor is a Moabitish deity is God, a Moabitite god. Baal Peor is nothing but their god, Baal of Peor. It is a Baal. Baal is his god. Remember this god Baal. And ate sacrifices of the dead. Thus they provoked him to anger. They incited him to anger with their invention. Invention is what? With their acts. And the plague break in upon them. What is plague? Plague is pestilence, infectious disease. What happened? They provoked him to anger with their invention. Invention here is act. By doing whatever they did, worshipping this Baal Peor. And what happened? A plague broke. Why the plague broke? Because of that sin. Plague didn't break for any reason. Then stood up Phinehas and executed judgment
and so the plague was stayed. Now what happened? This person came and executed judgment. जो कौन ने ये किया है उनको खत्म किया. अभी judgment is executed. So now what happened? Plague, that disease, that infectious disease stopped. Why it stopped? Because the sin is dealt with. Sin today also has consequences. It has to be dealt with. I am to love the sinner, not the sin. If you are a sinner, yes, I am come to love you. This is what you are all under sin. Worshipping idols, I am come to love you. I am come out of my way, out of my comfort zone to love you, that you know the truth. But not the sin that you are committing, idolatry. I am come to tell you, you need to forsake that. So now what has happened here? Phinehas has executed judgment. And what happened? The plague has stayed. Why the plague had come? Why this infectious disease had come? Because of sin. Now sin is dealt with. Judgment is executed on that person, whoever was worshipping this Baal Poer. And now what happened? The plague has stayed. उन्होंने प्यावर के बाल के देवता का जुआ स्वीकार किया और निर्जीव देवताओं को चढ़ाई बलि खाई. उन्होंने अपने आचरण द्वारा ईश्वर को चिढ़ाया और उनमें महामारी फैल गई. तब फिनहास उठकर मध्यस्थ बने और महामारी रुक गई. हाँ, कौन उठा? फिनहास उठा और क्या किया? उठकर मध्यस्थ बने. हाँ, और उसके बाद मारामारी खत्म हो गया. महामारी रुक गई. हाँ, वो रुक गए अपने आप. वो क्यों रुक गए? वो किसके पीछे था? वो पाप के पीछे था. ये मारामारी आ रहा था. अभी उसको रुकना पड़ा. पाप गया तो रुकना पड़ा. पेओरच्या बालाची ती सेवा करू लागली. हाँ, ते सेवा करून लागले. बाल किती? बाल पोयराचे. पेओरच्या पेओरच्या बालाची ती सेवा करू लागली आणि मेल्ल्या भेटयल्ल्यो बालियो खाऊंक लागली. हाँ, असल्या कर्तुबांनी तांणी ताचो राग पेटयलो आणि त्यांच्या मध्ये मारी फुटली. त्या वेळा फेयस उठलो आणि ताणे झगडी केली. त्याने किती केले? त्या वेळा फिनेयास उठलो हाँ, आणि ताणे झगडी केली. आणि त्यांना महामारी थांबली. एक्चुअली इट इज नॉट जोगड़ी, इट इज जजमेंट. मीन ये लोग जो कर रहा था ये पाप, इनके से जजमेंट डाला उसने. जजमेंट, आय डोंट नो व्हॉट कोंकणीन जजमेंट कितें म्हणटा. म्हणजे ते आता कोर्टान जज हे करता न्हू जजमेंट. ते जजमेंट केले, तेका फर्मंट दिले. आणि फर्मंट दिले उपरांत ते प्लेग, ते डिजीज, हाँ, वो बंद हो गया.